Hello everyone, my name is 𝗘𝗅𝗽𝗧 and I welcome you all to the official YouTube channel of 𝗘liche Edumakers. I hope you are watching our videos जहाँ पर हमने CAT की strategies की बात करी है, previous year के papers के कुछ questions solve किए हैं in different sections of different subjects. We have talked about the strategies, we have talked about the eligibility criteria of CAT, etc. etc. Right. If you are somebody who's appearing for CAT 2024, then I'm assuming that this video will be helpful for you. ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत simple चीज़ें I'll be telling you today, but then simple के साथ साथ these are very essential. These are the things which probably not many people talk about, but are very important things. So some do's and don'ts, बहुत simple do's and don'ts हैं जो आपको ध्यान रखना है, but अगर ध्यान नहीं रखा so it can create a disaster. So let's not wait for the disaster to be created and let's see some simple do's and don'ts which you should be aware of if you're appearing for CAT 2024. Let's see. First, don't be late. Now, if you are in the same city जहाँ पर आपका सेंटर आया है and if you're already aware of the exam center, तो एक दिन पहले जाकर आप एग्जाम सेंटर पे विजिट करके आ जाइए, right? So that commuting becomes easy for you. Second option, अगर आपका सेंटर आपके सिटी के बाहर आया है, then talk to somebody familiar with that city, with that location, so that on the exam day, on the date of the exam, ज़्यादा panic नहीं होना है, right? Do not be late for the exam. इसलिए सारी चीज़ें, commuting, the way of going, mode of communication, everything should be planned well in advance. Required documents, very important. Your valid ID proof should be with you while you go to the center. ये पहले ही आप check कर लेंगे एग्जाम के एक दिन पहले. The previous night you should check the required documents you need to carry for the exam next day. Preserve your tranquility and mental clarity, very important. If you're not in a habit of meditation or physical exercises, I would really recommend that you start meditating exercises or you start some physical exercises as well. This will help you keep your calm and create maintain the mental tranquility and clarity for your preparation and for your exam, specifically on the day of exam. Read instructions thoroughly. Which instructions I'm talking about? I'm asking you to read the instructions thoroughly. The instructions which are given on the paper, जो आपके screen पर exam start होने से पहले आएंगी, वो भी instructions अच्छे से पढ़नी है. उसके पहले we have already made the videos regarding the important information for CAT 2024 taker. वो भी instructions आप ध्यान से पढ़िए and then leave for the exam. Time management, very important. Time management सिर्फ exam time पर ही नहीं, but time management should be your criteria for the preparation as well. जब भी आप अभी भी जब preparation कर रहे हैं, allocate your time according to your sections, according to your strengths, according to your weaker areas, etc. Time manage जितना कर पाएंगे उतना जल्दी, उतना clarity से और उतना productively आपकी preparation आगे चलेगी. Correct. The next is mock test. Very important. We have already told you the importance of mock test in one of our videos. Like for example, in our institute, we have already started mock test for students way back. उनकी एग्जाम आते आते CAT की डेट तक बहुत सारी mock test already complete हो चुकी होगी. Our students would have given various mock tests in our institute, online as well as offline. Mock test के बाद it's very important. Now whatever student and whoever student you are, like whether you are preparing for from the YouTube or you're preparing with the help of an institute, or whether you're preparing by self-study or just by books, just by recommended books, whatever it is, appear for mock test. Solve the last year's CAT paper. Right? After you have solved, after you have appeared, practice lots and lots of mock. After that, आपको analysis करना भी ज़रूरी है. Keep analyzing, keep identifying your strength, keep identifying your weaker areas, right? Keep identifying the questions which are continuously going wrong. क्यों हो रहे हैं?
क्या करना चाहिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या करना है, बिकॉज देयर वुड बी द टाइम, लेट्स से 1 month बिफोर द कैट, यू विल नॉट बी एबल टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक ऑल टुगेदर. तो आपको आपके स्ट्रेंथ्स और वीकर एरियाज अभी से आइडेंटिफाई करने हैं, सो दैट वीकर एरियाज को इम्प्रूव करने के लिए अभी ही आप उसके कॉन्सेप्ट और बेसिक स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं. नेक्स्ट इज रिव्यू योर रिस्पॉन्सेज. ये मैं एग्जाम डे की बात कर रही हूं. डू नॉट फॉरगेट टू रिव्यू योर रिस्पॉन्सेज. व्हेन आई से रिव्यू योर रिस्पॉन्सेज, एक सेक्शन खत्म हुआ, दूसरा सेक्शन जब स्टार्ट होगा, you cannot switch to next section, you know it, right? Again, in one of the videos, we have already talked about it, right? You cannot switch to the next section until the time gets over for the current section. तो जब आपका अगर सारे आंसर्स आप मार्क कर चुके हैं, आपके रिस्पॉन्सेज रिव्यू करिए. अनआंसर्ड क्वेश्चंस कितने हैं, अगर कोई क्वेश्चन मार्क किया है क्या उसमें करेक्शन करना है, डू यू थिंक दैट यू हैव टू चेक दैट क्वेश्चन अगेन. सो ये सारे आपके रिस्पॉन्सेज मीन्स द आंसर्स विच यू हैव मार्क्ड, right? So whatever answers you have marked, just review them thoroughly. Let's move to the next. Now, very very important. अब do's तो it's like करना ही है kind of. Right, let me talk about something which you don't have to do. Again, very very important. Don't rush. Rush नहीं करना है. Exam time में, exam day पे, you don't have to rush, marking the answer. Take your time. आप already इतनी mock test appear कर चुके हैं. You already know what the pattern is. Right? You already know the number of questions. I know CAT is unpredictable, but then एक overall आपको ऊपर से पता है, right? And लास्ट फ्यू ईयर्स से पैटर्न यही आ रहा है और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग मॉक भी आपको प्रिपरेशन करवा रहे हैं. सो डू नॉट रश फॉर मार्किंग योर आंसर. टेक योर टाइम, बी काम एंड देन आंसर. डोंट ड्वेल ऑन द प्रीवियस सेक्शंस. अगर एक सेक्शन खत्म हो गया है, टाइम खत्म हो गया है, एज आई हैव मेंशन्ड अर्लियर, दैट आप फिर से उस सेक्शन को रिव्यू नहीं कर सकते हैं एक बार टाइम खत्म हो गया. तो जब आप सेकेंड सेक्शन पे चले गए हैं, नेक्स्ट सेक्शन पे चले गए हैं, पिछले सेक्शन को भूल जाइए. Do not think about it. अरे मेरा ये वाला क्वेश्चन गलत था या सही था. Nothing can happen now, right? तो अब तो वो कर चुके हैं, हम सेक्शन खत्म कर चुके हैं, क्वेश्चन का आंसर कर चुके हैं. Now it cannot be rectified, correct? So for that very moment on the day of exam, please do not dwell on the previous sections, right? It will hamper your progress or your performance for the current section which you're doing, which you're attempting. So this is a special request, do not do that. Don't break the exam rules. ये तो rules तो वैसे भी break नहीं करना है. We don't have to break any of the rules. Exam के जो rules हैं वो already पता भी हैं, आपके form में भी हैं, हमने भी आपको videos में बताए हुए हैं. Plus you already know about it, right? So do not break the exam rule, never. All right, let's move ahead with it. Do not panic. जैसे मैंने बोला था, डोंट रश. अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें आपको लग रहा है कि अरे यार नहीं बन रहा है, नहीं सॉल्व होगा, समझ नहीं आ रहा है, इट्स ओके, डोंट पैनिक. कैन एनीथिंग बी डन दैट टाइम? यस. व्हाट विल हेल्प यू? योर कामनेस, राइट? योर पीस in your mind is going to help you in that, right? So do not panic. अगर question नहीं भी आ रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं समझ आ रहा है, do not panic. Let's move to the next question and then probably हम उस question पे वापस आएंगे. So don't do that. Do not overthink. Overthink in the sense what? Do not overthink on various things. एक ही question पे double thoughts आना, क्या जो मैंने मार्क किया है वो सही है, नहीं है, क्या करूं, आप दूसरे questions, आगे आने वाले questions को भी hamper करेंगे. So do not do that. So do not overthink on one particular question, right? Okay, don't get distracted. आसपास के लोग क्या कर रहे हैं, कौन से इंस्टीट्यूट के हैं, कितनी बार कैट दे चुके हैं, अरे ये तो फटाफट मार्क आंसर्स मार्क कर रहे हैं, मुझे नहीं हो. Do not get distracted with all of these things. Come on, right? इन्विजिलेटर क्या कर रहे हैं, एग्जामिनर क्या कर रहे हैं. हाँ, अगर आपको कुछ बोल रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, ऑफ कोर्स, हालांकि बीच में कोई इंस्ट्रक्शंस देते नहीं है, राइट? इट्स ऑलरेडी बीन सेड टू यू. सो डू नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड विद व्हाट अदर्स आर डूइंग. सो फॉर एग्जांपल, लास्ट ईयर कैट में बहुत तेज बारिश आ गई थी एंड देयर वर सेंटर्स जहाँ पर विंडो थी और विंडो से काफ़ी अच्छे से बारिश दिख रही थी. तो उस समय मौसम को इंजॉय करने, ठीक है, आई मीन मौसम अच्छा है, इट्स ओके, बट देन मौसम को इंजॉय करने में मत लगेगा एंड डिस्ट्रैक्ट मत होइए, राइट? सो बेसिकली when I say do not enjoy, I mean enjoy the weather, but then concentrate. Do not get distracted by the weather. Correct? So don't get distracted. All right. So these do's and don'ts should be remembered. Very, very important. छोटी सी गलती, थोड़ी सी भी गलती can cost us a lot.
right? All right, some quick थोड़ा सा रिविजन करते हैं, some quick टिप्स ऑफ डूज एंड डोंट्स. कैरी और एडमिट कार्ड, ये ऑब्वियस है, ये चीज पहले ही प्रीवियस नाइट ही देख लेना. एडमिट कार्ड हम ले चुके हैं, हमारे बैग में रख चुके हैं. कैरी योर आई कार्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कैरी योर वैलिड आईडी प्रूफ. Do not sign your admit card before arriving at the exam center. वो लोग वहीं से करवाते हैं. So when you enter the exam center, वहाँ पर आपको लिस्ट लगी हुई रहती है that these roll numbers से these roll numbers तक इस क्लासरूम में बैठेंगे. Once you go on that floor, right, आपका बायोमेट्रिक होगा. बायोमेट्रिक होने के बाद they'll be allotting you the room number and they'll be allotting you the seat. आपके सीट नंबर पर आपका नंबर ऑलरेडी लिखा हुआ रहेगा. करेक्ट. जब तक वो इंस्ट्रक्शंस नहीं देते हैं, do not sign or do not do anything on your admit card. Any which way, admit card पर कुछ भी scribble नहीं करना है. Next, follow the guidelines related to biometric attendance. वहां पर एक असिस्टेंट ऑलरेडी रहेंगे, एक इन्विजिलेटर भी ऑलरेडी रहेंगे. They'll be guiding you towards की biometric attendance आपको कैसे देनी है. It's not like that आप जा रहे हो और आप ही को खुद को करना है. There would be an invigilator or somebody to assist you sitting there and they'll be guiding you towards it, right? Okay. No unfair practices, that's quite obvious, right? Nothing, we don't have to break the rules, and no unfair practices. No unfair practices in the sense chits लेके नहीं जानी है. Please remember that. No cheating allowed, right? Okay. Don't shred pages from the writing pad. ये एक question में भी मैंने cover किया था. While we were talking about the questions you had asked on our YouTube channel and on the other social media pages, उसमें एक question था, and I have mentioned there also. आप writing pad वापस घर पर नहीं ले जा सकते. करेक्ट. सो for the same reason आप राइटिंग पैड में से पेजेस नहीं फाड़ सकते हैं, राइट? सो डू नॉट डू दैट, जस्ट सबमिट द राइटिंग पैड, क्योंकि राइटिंग पैड सबमिट होता है एग्जाम के बाद. सो डू दैट. स्टे हाइड्रेटेड. Avoid heavy meals on the day of the exam. Keep your calm. Have peace in your mind. And all the best for your exams. So these were some quick do's and don'ts for your exam. Very simple but very very important one. एक भी miss नहीं करना है. All the best for your exams. Keep learning with us. We will be coming up with lot of important information before your CAT 2024. Stay hydrated. Keep your calm on the day of the exam. All the best for your preparations. I shall see you super soon. Stay tuned.